Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today's topic is adverb. Let's begin. Ask your classmate the questions given below. Put a check mark in the correct box accordingly. Questions यहाँ पर है. Always जो करते हैं, usually, sometimes, rarely या never. So question पढ़ लेते हैं पहले. How often do you use a computer? क्या हमेशा करते हो, यूजुअली करते हो, तो उसके आगे टिक लगाना है आपको. ओके. देन डाउनलोड म्यूजिक फ्रॉम द इंटरनेट, प्ले गेम्स ऑनलाइन, वॉच टीवी, चेक योर ईमेल, प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, रीड अ न्यूज़पेपर, ईट फास्ट फूड. वर्ड्स लाइक ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, समटाइम्स, ओकेजनली एटसेट्रा टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स. कि एक्शन कितनी बार होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये वर्ड बच्चे. एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, वेरी, सेल्डम, क्लेवरली, क्विकली, एनीवेयर, हियर, टुडे, अगो, ऑलमोस्ट, डाउन, अप, हाउ, व्हेन, नेवर, ऑलवेज एटसेट्रा. एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब वर्ड होते हैं बच्चे. वर्ड जो हम पढ़े हैं ना अभी हमने, ये वर्ड होते हैं और ये बताते हैं मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, वर्ब के मीनिंग. ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं ये वर्ड्स. एडवर्ब्स टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने क्लासिफिकेशन इनका किया गया है. सो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब. फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. An adverb of manner shows the manner how an action is done. For example, strongly, widely, cruelly, gloriously, kindly, appropriately, innocently, intimately, etc. The officer shouted at the clerk angrily. The little child was praised highly. Some lambs are playing merely when the fox came suddenly. कितनी बार और किस तरह से एक्शन किया गया, मैनर्स क्या था एक्शन करने का बच्चे, किस तरह से एक्शन डन हुआ है, वो इन वर्ड्स की हेल्प से हम सेंटेंस में फॉर्म करते हैं. नो द रोप्स. मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर मेड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल, क्लोज का क्लोजली करके आपका क्या बन जाएगा बच्चे, एडवर्ब्स तैयार हो जाता है. ओके, एडजेक्टिव के अंदर आपने अगर ly को ऐड किया तो एडवर्ब बन जाता है. पोलाइट का पोलाइटली, एडिक्वेट एडिक्वेटली, फुलिश फुलिशली, लैविश लेविशली, वाइज वाइजली, बिटर बिटरली, काम कामली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली. एडवर्ब ऑफ टाइम. तो एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से वर्ड हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं? एन एडवर्ब ऑफ टाइम शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन इज डन. कहाँ पर एक्शन हुआ, कब की बात, व्हेन. For example, today, tomorrow, every day, daily, now, already, late, early, ago, soon, etc. We play cricket daily. I have already spoken to him. Can you come early? Let us talk to him tomorrow. Adverb of place. A adverb of place where shows the place where an action is done. Action कहाँ पर हुआ था, वो उसमें था when, कब हुआ टाइम में, और वेयर मीन्स होता है बच्चे कहाँ पर हुआ. फॉर एग्जाम्पल, हेयर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, आउट, इन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप, डाउन, विद इन, नियर, अवे, फार एटसेट्रा. आई डिड नॉट अलाउ हिम टू स्टे हेयर सो ही वेंट अवे. गो देयर, लुक आउटसाइड, आर द स्टार शाइनिंग अप देयर. मे आई कम इन सर, द कमांडर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स बैकयार्ड. एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी. An adverb of number or frequency shows how often an action is done. कितनी बार एक्शन हुआ है. For example, once, twice, always, often, never, generally, repeatedly, seldom, again, frequently, etc. He always tells this story. You seldom realize the gravity of the problem. We all should visit the temple frequently. Speak again. Adverb of degree or quantity. An adverb of degree shows the quantity or extent of an action. For example, very, true, almost, quite, nearly, entirely, partly, fully, so, altogether, pretty, any, rather, etc.
Example, we have finished the work together. The job was completely done. You are very handsome. We should rather do it this way. Interrogative adverb के अंदर questioning वाले बच्चे, an interrogative adverb is used to ask a question. For example, where, why, when, how. Where are you going? Why do you criticize him daily? When will you finish the job? How do you do? Relative adverb. A relative adverb refers back to its antecedent. For example, when, where, why. This is the tomb where Shah Jahan was buried. I was at the door when a car pulled up before my house. You should understand the reason why she is so soft-spoken. In the above example, where, when and why refer to their antecedents, the tomb, at the door and the reason respectively. अब इन्हीं से रिलेट करती हुई बच्चे ये एक्सरसाइज है, कैसे एडवर्ब को मैनर में देखेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज करनी है. यहाँ पर भी आपके एक्सरसाइज का कुछ पार्ट है बच्चे, ये भी कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब, पोजीशन एंड फंक्शंस के बेस पर हम इसको समझेंगे. एन एडवर्ब modifies a verb, an adjective or another adverb in a sentence. It should be placed as near as possible to the word it modifies. Care should be taken about its position as it can be changed the meaning altogether. For example, compare the following sentence. You only said that you will give me 100 rupees. Modifies करता है the verb said को. You said that you will give only 100 rupees. Modifies the adjective 100. The function of an adverb determines its position in a sentence. Generally, it has the following their position. At the beginning of a sentence, therefore, they entered the hall. Suddenly, the bus parked here. Then, in the mid position में कैसे use करते हैं? Between the subject and the verb. She quickly climbed up to look for monkey. You cleverly finished the task. At the end of the sentence के अंदर, you caught the thief cleverly. The king smiled variously. तो यहाँ पर क्या बताया गया बच्चे कि सेंटेंस के अंदर बीच में कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं उसको. In the connection, let's learn the following general rules. First is most adverbs of manners are used in mid position or end position. Some students easily finish the work. Some students finish the work easily. The little girl carefully made the rangoli. A little girl made the rangoli carefully. Most adverb of degree are placed in mid position. She nearly missed the target. This is very fine. Adverbs showing definite time are placed in the mid position or initial position. We met her yesterday. Yesterday we met her. They are playing cricket today. Today they are playing cricket. Adverb of definite frequency are placed in end position. We can now hold the meeting monthly. They will have to come to school daily. Know the verbs के अंदर बच्चे. In the example, we have a daily school. The word daily is not an adverb. It is an adjective. Adverb of indefinite frequency are generally placed in mid position के अंदर इसको रखा जाता है बच्चे. Like these adverbs are always placed in mid position. Always, ever, seldom, rarely, never. Like Karuna seldom speaks politely. They are always absent on Thursday. These adverbs can take all three positions, usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally. Normally, you can see him in the market. You can normally see him in the market. You can see him in the market. Normally, हम इसको ऐसे use कर सकते हैं position के base पर. Sometimes the guards are careless. The guards are sometimes careless. The guards are careless sometimes. So हम इनको 3 टाइप से यूज कर सकते हैं. Adverbs showing place और direction are placed in the end position पर ही कैसे लगाते हैं. The boy was sliding the staircase downward. Please go out. When an adverb modifies a transitive verb, it is never placed between the verb and its direct object. Like the doctor felt quickly the patient's pulse. नहीं, ऐसे नहीं यूज करना. The doctor felt the patient's pulse quickly. They kicked hard the ball. No, they kicked the ball hard. When the adverb modifies an intransitive verb, it follows the verb. The horse ran fast. The child fell hard.
Some adverbs are generally placed before the word they modify, even, only, merely, not, never. You were not allowed to enter. You were allowed not to enter. Only the short man gave us 5 rupees. The short man gave us only 5 rupees. Enough. Enough is always used after the word it modifies. The film was interesting enough to watch. He is tall enough to hang this word there. तो आपने देखना हर एक वर्ड को किस तरह से यूज किया गया है. When the verb comprises a helping verb or a main verb, an adverb is placed between them. You have luckily won the lottery. You can never finish the work in this manner. When an auxiliary functions like a main verb, an adverb is placed after it. She is always behind time. Those foreigners were there. पिक योर ब्रेन. तो जो हमने पढ़ा है बच्चे उसी से रिलेट करते हुए सेंटेंस इंसर्ट करने यहाँ पर दिए हुए हैं, वो करेंगे. नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. Like adjectives, adverbs can also be used to compare. Only the adverbs of manner, adverbs of time and adverbs of degree can be used to compare. The rules of changing positive degree into comparative and superlative degrees are similar to those of adjective. Like positive के अंदर comparative and superlative के बेस पर देखेंगे. Hard, harder, hardest. Long, longer, longest. Near, nearer, nearest. Soon, sooner, soonest. Ably, more ably, most ably. Certainly, more certainly, most certainly. Painfully, more painfully, most painfully. Swiftly, more swiftly, most swiftly. Much, more, most. Well, better, best. Ill, worse, worst. Late, later, latest. Last, little, less, least. Badly, worse, worst. Far, farther, farthest. Read the following sentence for the use of degree of adverbs. The turtle was walking slow. तो ये कैसा है बच्चे? स्लो क्या है? पॉजिटिव डिग्री में. ठीक है. देन कंपैरेटिव में द रैबिट वॉज वॉकिंग स्लोअर देन द टर्टल. द टाइगर वॉज वॉकिंग स्लोएस्ट देन ऑल एनिमल्स. सुपरलेटिव. रीमा केम लेट. पॉजिटिव. वंश केम लेटर देन रीमा. कंपैरेटिव. टीना केम लास्ट ऑफ ऑल. सुपरलेटिव. देन पिक योर ब्रेन. यहाँ पर बच्चे आपको एक्सरसाइज दी गई है. वो एक्सरसाइज आपने पूरा चैप्टर थोरोली समझते हुए कंप्लीट करनी है. डू इट योरसेल्फ बच्चों.